The State Bank of Pakistan's foreign exchange reserves rose by $4.2 billion to $8.7 billion during the week ending on 14 July. The reserves have almost doubled over a week's time after Pakistan received $2 billion from Saudi Arabia, $1.2 billion from the IMF under a $3 billion standby arrangement, and $1 billion from the UAE. This does not include the rollover of a $600 million loan from China announced by Prime Minister Shehbaz, which is expected to further shore up the state bank's reserves. Foreign Minister Bilawal Zardari called for the restoration of the Black Sea Grain Initiative, saying he would be reaching out to United Nations Secretary General Antonio Guterres and to his counterparts in Turkey and Russia on the matter. The Black Sea Grain Initiative was heralded at the time of its announcement, and most of us in the developing world breathed a big sigh of relief, and that this would address in a large way the issues and challenges that we faced with food security. Like other developing countries, food inflation and supply disrupts resulting from supply chains disturbances due to the conflict has severely impacted Pakistan. The Black Sea Grain Initiative was a positive undertaking. The United Nations, Turkey, and Ukraine and Russia. It is not a developing world's interest that this grain initiative is restored. I will be reaching out to the United Nations Secretary General, to my counterpart in Turkey, in Russia, to discuss Pakistan's concerns and our desire for the Black Sea Grain Initiative to be restored. Foreign Minister Bilawal made these remarks at a press conference speaking alongside his Ukrainian counterpart Dmytro Kuleba in Islamabad. The Ukrainian Foreign Minister arrived in Islamabad earlier today for a 2-day visit. He is on the first ministerial visit to Islamabad from Kiev since the establishment of diplomatic ties in 1993. The Election Commission of Pakistan's Special Secretary Zafar Iqbal assured that the electoral watchdog was fully prepared for elections and would hold the polls by 11th October if the National Assembly was dissolved on 12th August, when its 5-year term comes to an end. The ECP official statement pertaining to the date of the election comes as political parties, particularly those part of the ruling coalition, increasingly engage in consultations ahead of the polls slated to take place later this year. Leader of the opposition in National Assembly Riaz said a meeting between him and Prime Minister Shehbaz was expected around 1st August, during which they would consult on the candidates for the caretaker PM ahead of the elections. मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात यकम के करीब मुतवक्के है और उसमें मैं अपने नाम दूंगा और फिर 1-2 मीटिंग्स में ये फैसला होगा कि हम किसी नाम पे मुत्तफिक होते हैं या नहीं। 3 नाम मैंने देने हैं, 3 नाम वज़ीर-ए-आज़म साहब ने देने हैं, और उसके बाद अगर हम किसी एक नाम पे मुत्तफिक हो गए तो उस पर मेरे भी साइन होंगे और वज़ीर-ए-आज़म साहब के भी साइन होंगे, और अगर हम किसी एक नाम पे मुत्तफिक ना हुए तो फिर मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा और वो उस पर उन्हीं 6 नाम में से फिर वो एक नाम सेलेक्ट करेंगे। ये रूल्स हैं और इसी के तहत काम होगा। आपकी जो केयरटेकर पीएम हैं उसके लिए क्या कोई नाम आपने फाइनलाइज किए हैं? जी, मैं उस पर वर्किंग कर रहा हूँ, लेकिन अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। मेरी इतला के मुताबिक 8 अगस्त को असम्बलियाँ तलील की जा रही हैं, और अगर 8 अगस्त को असम्बली तलील होगी तो इसका मतलब है कि निगरान हुकूमत जो है वो 90 दिन में इलेक्शन कराने की पाबंद होगी। तो इस सोच के साथ कि 90 दिन के बाद इलेक्शन हो, निगरान हुकूमत बनेगी और वो इसकी पाबंद होगी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए। Meanwhile, the legally required consultations that must take place between the Prime Minister and opposition leader of candidates for the caretaker government have yet to begin. Raja Riaz told Independent Urdu that he and the Premier were to recommend 3 names for the caretaker Prime Minister each, adding that if they did not agree on the name, the matter would be referred to the Election Commission of Pakistan. India's Prime Minister Narendra Modi said that the country has been shamed by a video showing a mob parading 2 women naked in a northeastern state where ethnic violence has claimed at least 120 lives. Speaking publicly about the Manipur clashes for the first time since they erupted in May,
Modi said his heart is filled with pain and anger. The video clip showed two women walking naked along the street and being jeered and harassed by a mob in the state, where the authorities have imposed an internet shutdown. It was reportedly filmed in early May but went viral on social media yesterday. The Pakistan Petroleum Dealers Association announced shutting down fuel pumps across the country on Saturday, 22nd July, demanding an increase in profit margins amid an inflation crisis. हमने अपीलें की सब अखबार पाकिस्तान के सब अखबारों में, और हमने कोशिश की कि हम स्ट्राइक करते हैं, हमारे पंपों का भी सेल कम होती है, अवाम को भी तकलीफ़ होती है, हम खुशी से काम नहीं करना चाहते। अगर अब मैं तारीख़ आपको बता रहा हूँ, मैं एम्बुलेंसेस और जितनी दीगर अदारे हैं वो जुमे के दिन अपने टैंक भरवा लें। अब मैं आपसे बहारत मजबूरी और तकलीफ़ दे बात कर रहा हूँ कि 22 तारीख को सुबह 6 बजे से पाकिस्तान के सब पेट्रोल पंप बंद हो जाए। अगर गवर्नमेंट ने, मुझे कोई उम्मीद नहीं रही वरना हम ये इक़दाम नहीं करते, और मुझसे मिनिस्टर से वायदा किया कि मैं परसों जो गुज़र गया कि मैं आ रहा हूँ, फिर वो गायब हो गए। मालूम नहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या कहा है और क्या कहा है। अगर ये जा रहे हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, तो इनकी मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अवाम को तकलीफ़ न दें, डीलरों के बिजनेसमैन के साथ इंसाफ करें। ये तो कोई बात है, इसका मतलब ये है कि हम चले जाएंगे, जो होता रहे होता रहे। ये इस मुल्क में बड़ी तकलीफ़ दे बात है, और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो हमारी तकलीफ़ है, हमने कोई ऐसी बेजा बात नहीं की है, आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, और हम मजबूरन स्ट्राइक पे जा रहे हैं। In a press release, the PPDA chairman Abdul Sami Khan said the consumer price index had increased to 38%, while electricity and other utility rates had also spiked due to the Kibber rate. The association is demanding their profit margin to be more than double to 5% from the current level of 2.4%.